Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Today is lecture second, part A by Arafat Mujeeb, and the chapter name is How Do Organisms Reproduce. We are going to continue this, including 10th biology and in association with FEI Higher Secondary Institute, Now. Today our topics are modes of reproduction, different modes of asexual reproduction. Today in this topic, in lecture second, part A, we today are going to discuss the modes of asexual reproduction. Especially focus would be on binary fission, and second is the multiple fission, binary fission and multiple fission. And now specific content we are going to discuss in this asexual mode of reproduction is the binary fission. And what the word binary means? Why, first of all, I discussed the binary fission in some points I already mentioned on the board. What do you mean by the term binary fission? Bi means two, and the fission means division. Binary fission here represent, it is a word which represent organism which divide into two, which split into the two, which undergo into two equal fragments. The word represents so. And this binary fission is common. It has been seen that it is common in protozoa like amoeba, euglena, paramecium, trypanosoma, and etc. जो majority common example, common mode of asexual reproduction is seen in protozoa. It represents the group of protozoa which in major develop their young ones under favorable climatic conditions by means of binary fission. And the other examples including the binary fission are flatworms like planaria, and second bacteria, or the belong to the kingdom Moneria. Bacteria which include the example, and the algae, in case green algae, Chlamydomonas are the other examples. Common example, it has commonly seen this type of binary fission as asexual mode of reproduction in protozoa, that amoeba, euglena, paramecium, I already told you. That in binary fission, two divisions take place. First of all, there take place the karyokinesis. What do you mean by karyokinesis? Karyokinesis means it is a Greek name of the nucleus, the karyon, that is the nucleus. Nucleus undergo, first of all, before the cell undergo the division into the two, it is nucleus divide into two equally into two halves. That means first it goes under the karyokinesis में चला जाता है. That means splitting of its nucleus equally into the two. Then is the second step which is applying, which including the binary fission, is the cytokinesis. Cytokinesis here means the splitting of cytoplasm of the parental cell, the segregation of the cytoplasm, division of cytoplasm also take place, and some part of cytoplasm remain associated with one part of nucleus, and other part of cytoplasm remains associated with other part of nucleus. That means two terms are involved in the binary fission. First of all, I also mentioned in my notes that karyokinesis, जिसमें nucleus division takes place, and then the cytokinesis, wherein the cytoplasmic division take place. Now I am going to explain the binary fission with the help of an example which is included in NCERT syllabus, that
take a peculiar example. I will take the amoeba, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. उसमें मैंने यहाँ बोर्ड पे भी दिखाया है कि डायग्रामेटिकली इन स्टेप फर्स्ट, इन स्टेप सेकंड, इन स्टेप थर्ड एंड स्टेप फोर्थ में कैसे फिर बाद में टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स एग्जिस्ट होते हैं, जनरेट होते हैं एक पेरेंटल मैच्योर एमोबिक सेल से, कैसे वो डेवलप होते हैं. बाइनरी फिशन का आई रिपीट हियर दैट मीन डिवीजन इनटू two. Here is the generation of two identical cells. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे हम डायग्राम के, और डायग्राम के और भी जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में, you should explain this with the help of an example. That is like amoeba, you should take an example. Often we take the amoeba in the biological science, we take mostly it a single cellular organism. We take it it as an example to explain the concept of binary fission. This is the first part. This is a parental cell, and what it is I write here, it is organization. खाली हम इसमें 3 पार्ट्स पे ध्यान देंगे. सीएम होता है सेल मेम्ब्रेन, इसका पीआरटी मैंने रिप्रेजेंट किया थी, द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस पेरेंटल सेल. एंड जो डॉट बड़ा डॉट मैंने इसमें डायग्राम में दिखाया, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस पेरेंटल सेल, दैट इज अमोबा. एंड देन सेकंड स्टेज में मैंने देखा कि इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस से अप्लाई होता है. पहले जो न्यूक्लियस है इसका जरूरी होता है पहले ये डिवीजन होना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस starts to divide into two, and it starts some depression takes place in the center, and the nucleus division first takes place. Then there is a partly division of the cell membrane. Then some part of cytoplasm go this way and some part of cytoplasm go to this way. That means here is the initiation of the cell division. सेल डिवीजन बाइनरी फिशन में यही सेल पेरेंटल सेल डिवाइड होते हैं टू. तो यहाँ थर्ड पार्ट में मैंने देखा पूरा हम यहाँ आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि न्यूक्लियस जो है पूरा डिवाइड होता जा रहा है इनटू द टू. सम पार्ट ऑफ न्यूक्लियस गो इनटू दिस पार्ट एंड सम पार्ट ऑफ, और यहाँ पे हम पूरा यहाँ पे विजिबल भी है, some part of cytoplasm go to this side and some part of cytoplasm to go to this side. ये प्रोसेस किस में हो रहा है? ये प्रोसेस हो रहा है एक पेरेंटल सेल में, मैच्योर एमोबा सेल में, एडल्ट स्टेज में है, कैपेबिलिटी रखता है टू अंडरगो द बाइनरी फिशन. हाँ, बाइनरी फिशन इज वन ऑफ द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहले कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पे देखिए विजिबली जो न्यूक्लियस है 50-50% डिवाइड होता है, और साइटोप्लाज्म में लगभग 50% या मतलब कंट्रीब्यूट होता है, और सेल मेम्ब्रेन में यहाँ आप विजिबल देख सकते हो. एक तो यहाँ पे डिवीजन है, न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, यहाँ सेल मेम्ब्रेन भी, और साइटोप्लाज्म में भी यहाँ एक कंप्रेस पार्ट मिलता है. यहाँ पूरा हमें क्लियर दिखता है कि यहाँ डिवीजन होना, अब डिवीजन तैयार है. यहाँ पे स्प्लिटिंग प्रोसेस हो सकता है इन दोनों के बीच में, और कंटेंट बराबर जितना इसमें कंटेंट है उतना इसमें भी कंटेंट रिटेन होता है. तो यहाँ दोनों चीजें अप्लाई हो गया है. पहले मैंने बताया ऑलरेडी, जो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है जिसमें न्यूक्लियस अंडरगो द डिवीजन, देन साइटोकाइनेसिस, देन जो साइटोप्लाज्म है इट आल्सो अंडरगो द डिवीजन इक्वली. Then here in the third, it is the third step, and in the fourth step we totally obtain the two identical cells by a mature parental amoebic cell, that is two identical daughter cell generated by a single mature amoebic cell into the. So if we studied one of the identical cell of the amoeba, that it also contained like the parental cell, it also contained the 3 part. I already mentioned here 3 parts: cell membrane, PRT, protoplasm, and nucleus. Here we can also see in a daughter cell that cell membrane इसमें भी है, प्रोटोप्लाज्म भी इसमें है, और न्यूक्लियस भी है इसमें है. वही बात है इस दूसरे आइडेंटिकल डॉटर सेल में. दैट मीन्स वन मैच्योर पेरेंटल सेल इन केस ऑफ अमोबा यूनिसेलुलर लाइक ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुए यहाँ पे 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल. ये डॉटर सेल
क्यों कहलाता है? ये सेल जो हम बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, विच पार्ट रिप्रेजेंट द पेरेंट एंड विच पार्ट रिप्रेजेंट a new individual, so that they call them the identical daughter cells. Here we obtain two daughter cells in this. With the help of a diagram, I explain that what do you mean by the concept of binary fission. बहुत सारे examples भी है, खास तौर हमने according to your NCERT textbook we take a mobile like organism to explain this concept. यहाँ जो बाइनरी फिशन है, बाइनरी फिशन में आप एक पॉइंट नोट करिए कि जो बाइनरी फिशन यहाँ पे जो पेरेंटल सेल है इसकी डेथ नहीं होती है, और डेथ के एज डेथ के कंपैरिजन में इसमें it gives the generation of two identical cells, and these two daughter cells then start growth, development, then it attains the maturity stage, then after it also reproduce like the parental cell, it also reproduce and it makes its continuity of life. Thank you, and note down all these, note down all these on your copies about the concept of binary fission.